Good morning, students. Welcome to you all in chemistry class. First numerical is, what will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with velocity 10 meter per second? What will be the wavelength? आपने यहाँ पे क्या सॉल्व करना है? Wavelength, lambda. Mass given है 0.1 kg. Moving with velocity 10 meter per second. Mass given है 0.1 kg, velocity 10 मीटर पर सेकेंड, और आपने सॉल्व क्या करना बेटे? वेवलेंथ. लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. Yes, Garabdeep. Yes, ma'am. Answer is 6.626 into 10 raised to power minus 34 meters. बेटे पहले वैल्यू पुट करवाइए. प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 raised to power minus 32. ठीक है. मास 0.1 kg और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. 6.626 into 10 raised to power minus 34 meters. Minus 34 meter. Right? Yes. Very good, Garabdeep. This numerical is solved numerical in your NCERT book. Problem 2.12 is solved आपकी बुक में. Next, mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. If its kinetic energy is 3.0 into 10 raised to power minus 25 joules, calculate its wavelength. Mass of electron 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. Kinetic energy given है हमें 3.0 into 10 raised to power minus 25. Kinetic energy is equal to half mv square. ये भी न्यूमेरिकल आपकी बुक में सॉल्व है. प्रॉब्लम नंबर 2.13. प्रॉब्लम नंबर 2.13. पेज नंबर 47. सॉल्व कीजिए बेटे इस न्यूमेरिकल को. आपने कैलकुलेट क्या करना है? वेवलेंथ. लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. यू नो द वैल्यू ऑफ h. प्लैंक्स कांस्टेंट. m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. वेलोसिटी आप सॉल्व करेंगे फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी. यस गुरशरण कौर. Ma'am, kinetic energy is equal to half mv square
Right. Mass of electron is 9.1 into 10 raised power minus 31 kg. Okay, M 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg into V square is equal to 3.0 into 10 raised to power minus 25. Right, बच्चे? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, V square is equal to 3 into 10 raised power minus 25 into 2 divided by 9.1 into 10 raised power minus 31. Okay. Next. Ma'am, then lambda is equal to h by mv, and we will put the values. H is equal to 6.626 into 10 raised power minus 34, and mass is इसमें equal V to square आ जाएगा 9.1. 659,340. Okay. And velocity is equal to NCERT बुक से देख के बोल दीजिए. 812 meter per second. राइट. अब आपने सॉल्व क्या करना है? वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 into 10 raised power 6.626 minus into 10 raised to power minus 34. Yes. divided by 9.1 into 10 raised to power minus 31. Right. Velocity into 812. वेरी गुड. सॉल्व कीजिए बेटा इसको. 8967 into 10 raised to power minus 10 meters. 896.7 nanometer. राइट बच्चे? Next numerical. Calculate mass of photon. Calculate mass of photon with wavelength 3.6 angstrom. Calculate mass of photon with wavelength. Wavelength given है और हमें क्या solve करना है? Mass. Mass of photon. Wavelength is equal to 3.6 A naught, that is 3.6 into 10 raised to power minus 10 meter, and lambda is equal to h upon mv. Solved numerical in your NCERT book, problem number 2.14. अब NCERT बुक से देख के बता दीजिए. Yes, दीप कमल. Madam, good morning. हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा. Is equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34 Okay. divided by 3.6 into 10 raised to power minus 10. And velocity of photon हो गया velocity of light के पर Yes, velocity of light यहाँ पे लिखेंगे 3 into 10 raised to power 8 meter per second. राइट बच्चे? सॉल्व हो जाएगा अब न्यूमेरिकल दीप कमल. 6.135 into 10 raised to power minus 20. Next numerical based on de Broglie equation. NCERT unsolved numerical 2.20. 2.20 unsolved numerical. Calculate the wavelength of electron. Calculate wavelength of electron. Velocity given है बच्चे कितनी? 2.05 into 10 raised to power 7 meter per second. You all know the mass of electron?
9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. Yes, Hiten. Ma'am, yes, ma'am. Here we will apply the formula lambda is equals to h upon mv. Right? Ma'am, h is equals to 6.626 into 10 raised to the power minus 34 Okay. upon 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg into velocity 2.05 into 10 raised to power 7 meter per second. कैलकुलेट कीजिए वेवलेंथ. दानिका ने सॉल्व कर लिया है. सुवीर, सुखरीत, वेरी गुड. सारी क्लास सॉल्व कीजिए इसको. गुरशरण, कृष कुमार, दीप कमल, सुखरीत, वेरी गुड बच्चे. अश्मित अग्रवाल, गुड. वैभव कालिया, गुड बच्चे. जल्दी से कैलकुलेट कीजिए वेवलेंथ. यस, कृष कुमार आंसर बोलिए. 3.8 into 10 to the power minus 10 मीटर आ गया. चेक कीजिए बेटे आंसर. यस, सचनीत कौर. Ma'am, answer will be 3.55 into 10 raised to power minus 11 meters. Very good. 3.55 into 10 raised to power minus 11 meter. Very good, Sachneet Kaur. Next numerical of NCERT book. Numerical number 2.57. 2.57 of NCERT. Unsolved है ये आपकी बुक में. Yes, beta, read the statement. Yes, ma'am. Dual behavior of matter proposed by D. Broglie led to the discovery of electron microscope, often used for the highly magnified images of biological molecules and other type of material. If the velocity of the electron in this microscope is 1.6 into 10 raised to 6 meter per second, calculate the de Broglie wavelength associated with this electron. Velocity of electron 1.6 into 10 raised to power 6 meter per second. Calculate de Broglie wavelength associated with this electron. Solve कीजिए बेटे जल्दी से numerical. Yes, good. Thanika, Gursharan, Deep Kamal, Supreet, अश्मित अग्रवाल. न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया बच्चे. बाकी क्लास जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए. ये वेरी गुड कुलबीर कौर. Yes, ma'am. Ma'am, here. Yes. Formula. Here, lambda is equals to h upon mv. Good. Here, h will be 6.626 into 10 raised to power minus 34 Okay. upon mass of electron 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg
into ये velocity याद रखोगे given कि यहाँ is पे आपने केजी में मास लिखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 Yes. into 10 raised to power minus 31 kg. Velocity in given है 1.6 into 10 raised to power 6 meter per meter per second. second. And answer 0.45 into 10 raised to power minus 9 meter. Very good. 0.455 into 10 raised to power minus 9. Minus 9 meter. Okay, good. 4.55 into 10 raised to power minus 10 मीटर. अश्मित, अगर हमें आंसर को पिकोमीटर में लिखना हो देन यही होगा 455 पिकोमीटर. Yes, ma'am. Yes, 12. Yes. ओके, Yes, ma'am. नोट कर लीजिए बेटे इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन. Next numerical of NCERT book, numerical number 2.58. NCERT unsolved numerical 2.58. लविश सब्बरवाल, रीड कीजिए बेटे स्टेटमेंट. Yes, ma'am. Similar to electron diffraction, neutron diffraction, microscope is also used for determination of the structure of molecules. If the wavelength used here is 800 picometer, calculate the characteristic velocity associated with the neutron. Wavelength 800 picometer, right? Calculate velocity associated with neutron. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रॉन्स की. Or you will calculate the velocity associated with the neutron. Yes, very good. यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. यस, धनिका शर्मा. यस मैम. मैम सबसे पहले वेवलेंथ को हम मीटर में करेंगे. वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन mv. वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन mv. ओके. मैम ऊपर 800 पिकोमीटर को हम मीटर में करेंगे विच इज इक्वल्स टू 800 into 10 raised to power minus 12 मीटर. ओके जी. मैम मास ऑफ न्यूट्रॉन इज दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. सो मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा बेटे क्या होता है? 1.675 into 10 raised to power minus 27 kg, right बेटा? kg. Okay. Yes ma'am. Now h value, Planck's constant 6.626 into 10 raised to power minus 34 right? over m is equals to 1.675 into 10 raised to power minus 27 Okay. and wavelength is equals to 800 into 10 raised to power minus 12. v को उधर ले जाएंगे हम. ये आपने v सॉल्व करना ना, तो यहाँ पे हो जाएगी Yes, ma'am. वेवलेंथ 800 into 10 raised to power minus 12. Velocity is equal to 4.94 okay. into 10 raised to power 2 meter per second आ रही है. सारे टास्क को सॉल्व करने दीजिए. Yes.
कृष्ण ने सॉल्व कर लिया, दीप, कमल, सुप्रीत, सचनीत, वैभव कालिया, अश्मित अग्रवाल, वेरी गुड बच्चे, दिशा प्रभाकर, गुरबीर कौर, सारे क्लास कैलकुलेट कीजिए बेटा। ये गुरलीन कौर मदार, ओके गुरलीन कौर आंसर बोलिए बेटा। गुरलीन कौर, Yes, ma'am. 4.94 into 10 raised to power 2 meter per second. नो, हाँ जी 4.87 into 10 to the power 2 meter per second. आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.00494 into 10 raised to power 5 meter per second, और you can write 494 meter per second. ओके जी, इतना ही यार. ठीक है। Yes. नोट कर लीजिए बेटे न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, गर्भदीप। If the velocity of electron in Bohr's first orbit is 2.19 into 10 raised to power 6 meter per second, calculate the de Broglie's wavelength associated with it. Velocity of electron in Bohr's first orbit. Velocity of electron 2.19 into 10 raised to power 6. Calculate de Broglie wavelength. You know the mass of electron? Yes, Garabdi. What is the mass of electron? Mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. Lambda is equal to h upon mv. Yes. And h 6.626 into 10 raised to power minus 34 upon 9.1 into 10 raised to power minus 31 into 2.19 into 10 raised to power 6. Now wavelength is equal to 0.33 into 10 raised to power minus 9. okay. गर्भ पिकोमीटर में क्या होगा ये? 0.03. 332. Right. राइट बच्चे? Yes. राइट कृष्ण कुमार? Yes, ma'am. सही है बिल्कुल. ओके जी. नेक्स्ट, Bohr's postulate of angular momentum from de Broglie equation. According to Bohr's model of atom, the electron revolves around the nucleus in circular orbit, right? According to Bohr's model of atom, the electrons revolve around the nucleus in circular orbits. And according to de Broglie concept, electron is not only a particle but has a wave character.
It means circumference of orbit. Circumference of orbit means 2 pi r. 2 pi r is equal to n lambda. Right, बच्चे? According to de Broglie concept, electron is not only a particle but has a wave character. Wave characters mean यहाँ पे wavelength होगी. Circumference orbit का 2 pi r किसके इक्वल होगा? n into lambda के. And de Broglie के accordingly lambda किसके इक्वल होता है? h upon mv. It means 2 pi r is equal to n h upon mv. Can we write it like this? mvr. ये 2 pi इधर आ जाएगा. nh upon 2 pi. What is mvr? Angular momentum. बोहर के आपने एक पोस्टुलेट में ये किया था ना कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi. एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi. तो ये इसी चीज को किसने एक्सप्लेन कर दिया है? डी ब्रॉगली इक्वेशन. mvr is equal to nh divided by 2 pi.